Assalamu alaikum. I welcome all the participants in our two-day seminar on behalf of DAS. The seminar series is part of DAS event calendars and is carried out on every Thursday at 2 p.m. Today, the topic of our seminar is application of hybrid meta-heuristic techniques for mathematical problems, and it is presented by Dr. Ehtisham Azhar, Assistant Professor, Department of Mathematics and Statistics. I hope this scientific talk will provide an opportunity to get in-depth knowledge on the topic. After the presentation, there will be questions and answer sessions. Please, Dr. Saab, over to Dr. Ehtisham Azhar, sir. Start, please. Dr. Ehtisham, sir. Start. Please. Okay, sir. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I am Dr. Ehtisham Azhar from Department of Mathematics and Statistics. First of all, I would like to tell that I did my PhD in applied mathematics. As mostly people know that there are two main branches of mathematics. One is pure and other one is called applied. So my research area is related to applied mathematics. And in applied mathematics, specialization of my work is basically fluid mechanics. So today I am going to talk on application of hybrid meta-heuristic technique on mathematical problems. But before going to start the formal presentation, I would like to thank Director Advanced Study and his team for organizing such a nice activity and give me opportunity to present my research with respected faculty members and research students. As you people know that applied mathematics is theoretical based field which provides solution against some mathematical models. Due to diverse field of faculty members, I would bound myself that how to find the solution of non-linear problems by using newly adaptive techniques which are called hybrid meta-heuristic technique. So the layout of my presentation consists of some basic terms related to fluid mechanics, methodology of research, and related to hybrid meta-heuristic technique. I would like to share something related to artificial neural network, and for optimization purpose, I would like to discuss genetic algorithm and other meta-heuristic technique to some mathematical problems. The aims and objective of this presentation is basically, I introduced numerical techniques, namely evolutionary computing technique for solving nonlinear coupled equations. Actually, in most of the mathematical problems, we have highly nonlinear differential equations or system of differential equation. So to find the solution of those differential equation, analytical, as mostly people know that there are two types of solution. One is called analytical solution and the other one is called numerical or optimized solution, which is an approximate solution of the equations. So as the equations are highly coupled, so in this presentation, I would share some numerical techniques to find the solution of some nonlinear equations. Neural network modeling for nonlinear coupled system, which are arising in viscoelastic fluid flow models. After the modeling, we will optimize the solution by using heuristic technique like genetical algorithm. Heuristic techniques are basically a problem-specific approach that employs a practical methods that often provide sufficient accuracy for the immediate goals. Basically, heuristic technique जो है हमारे पास short term solutions हमें provide करती हैं और decision making में जो है वो हमारी help करती हैं. Here are some basic concepts of fluid mechanics. Fluid mechanics is basically categorized into two main types of fluid. One is called Newtonian fluid and the other one is called non-Newtonian fluids.
in Newtonian fluids for which the shearing stress is linearly related to the rate of shearing strain are designated as Newtonian fluids. Are those fluids which in which shear stress is linearly related to shear strain is called Newtonian fluid. Whereas in non-Newtonian fluid, a non-linear relationship between shear stress and strain is produced. For example, blood and polymer solutions are non-linear, non-Newtonian fluids. Further, non-Newtonian fluids is classified into three main categories, types. One is called shear thinning fluids, and other one is called shear thickening fluids and Bingham plastic. In shear thinning fluid, basically viscosity decreases with increasing shear rates. Whereas in shear thickening fluid, viscosity of the fluid increases by increasing shear rates. जो हमारे पास बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स होते हैं वो उनमें मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फ्लूइड्स की और सॉलिड टाइप्स जो हैं वो उनमें दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमारे पास पाई जाती हैं. So Bingham plastic basically acts as a rigid body until a certain force is applied. This is the basically graphical representation of Newtonian fluid and non-Newtonian fluid. And through this graph, you can see or check that a linear relationship exists for Newtonian fluid and non-linear relationship exists for non-Newtonian fluids. A significant concept in the study of fluid mechanics is heat transfer, which is actually a transfer of energy from one system to another system. Here are some applications in which heat transfer phenomena can be used. For example, geothermal systems, food processing equipment, heat exchanger, pipe engineering analysis, gas processing, etc. And as the heat transfer is basically transfer of heat from one medium to another medium. So there are three modes of heat transfer. One is called conduction, and second one is called convection, and third one is called radiation. In conduction, basically, heat is transferred through direct contact of the bodies or surfaces. So conduction involves the transfer of heat through direct contact, and thermal energy is transferred to the neighboring molecules in a substance due to difference in temperature. Here are some application in which conduction phenomena is applied. For example, air is a poor conductor of cylinders. Metals are used for pans. Hold a metal rod in a flame. Variable of conductions are thermal conductivity, area through which the heat flows, lengths the heat has traveled, temperature difference. So basically ये है कि जितना ज़्यादा temperature difference होगा उतनी ज़्यादा heat जो है वो from one medium to another medium जो है वो transfer जो है वो होती है. जो second phenomena है heat transfer का, that is called convection. Convection में basically जो है वो particle की movements होती है, ठीक है ना, जबकि conduction में जो है वो एक medium से दूसरे medium में direct contact से जो है वो heat transfer होती है. So in convection heat transfer by the actual movement of the warm matter. जैसे hot water का जो phenomena है उसमें heat transfer होती है through convection. Three different types of convections भी होती हैं हमारे पास. One is called forced convection and other one is called natural convection. So in forced convection, fluid is made to flow past a solid surface by an external agent such as pan or pump. Whereas in free or natural convection, warmed fluid next to the solid boundaries causes circulation because of the density variation resulting from the temperature variation throughout a region of the fluid. Variable of convection depend on speed and surface area. And third and last mode of heat transfer is radiation, in which heat is basically transferred in the form of rays. It is a mechanism of heat transfer that requires no medium. Therefore, the only means of heat transfer through vacuum. Space energy is carried by electromagnetic waves and light wave, microwave phenomena.
Radio waves and X-rays are the examples of radiations. There are, for example, the sun's heat comes to us by radiation through the vacuum by space. As I told you that my specialization is fluid mechanics, or in any fluid mechanics phenomena, there are three governing equations. One is called to describe any fluid flow. One is called continuity equation. Second one is called the equation of motion or momentum equation. And third one is called energy equation. अगर आप heat transfer phenomena को discuss कर रहे हैं कि how to heat transfer from one medium to another medium, तो फिर हमारी ये एनर्जी इक्वेशन भी जो है वो इन्वॉल्व होगी, कंसिडर की जाएगी. और अगर आप जस्ट वेलोसिटी या अदर बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हमारी मोमेंटम इक्वेशन जो है वो कंसिडर की जाए. सो ये थ्री बेसिक इक्वेशंस हैं किसी भी फ्लूइड फ्लो को जो डिस्क्राइब करते हैं. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ये बेसिकली हम डिराइव करते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और जो मोमेंटम इक्वेशन है that derives by using law of conservation of linear momentum, and energy equations जो है वो हम derive करते हैं by using law of conservation of energy. जो फर्स्ट इक्वेशन है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये बेसिकली जो है वो अनस्टेडी फिनोमेना के लिए रिप्रेजेंट है. टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना के लिए अगर टाइम इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा तो फिर ये जो फर्स्ट टर्म है ये इसकी रिमूव हो सकती है, एलिमिनेट हो सकती है. तो वो फिर हमारे पास फॉर इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी फ्लो के लिए जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो कहलाएगी. Whereas in second equation, that is equation of motion, the right side of the equation is basically represent the sum of all the forces, and in general mostly three types of forces acting on a body. First term is basically represent the gravitational forces that is acting on the body, and second term is basically pressure gradient or pressure forces, and third one is basically viscous forces of the between two particle or two layers of the fluid. And third equation is basically energy equation that describe how to heat transfer from one medium to another medium. Here are some boundary condition that actually when we model a problem, so with respect to order, we have required number of boundary conditions. So there are three types of boundary condition normally used in our problems. First one is called Neumann boundary condition, second one is called Dirichlet boundary condition, and third one is called mixed boundary condition. तो आसान अल्फाज में इनका जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर हमारे पास कंडीशंस जितनी भी हैं वो अगर फंक्शन पर डिफाइन हो तो वो हमारे पास न्यूमन बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो कहलाती हैं. और ये एग्जांपल में रिप्रेजेंट भी हो रहा है u of x is equal to some constant. और चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन अराइज होती हैं हमारे फिनोमेना में, तो डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो डेरिवेटिव पर जो है वो डिफाइन होती हैं. एंड थर्ड वन इज कॉल्ड मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन पर भी हो सकती हैं और उसके डेरिवेटिव पर भी जो है वो अप्लाई हो सकते हैं. सो ये थ्री टाइप्स हैं बाउंड्री कंडीशंस की: न्यूमन बाउंड्री कंडीशन, डिरिचलेट एंड मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन. So after modeling of the fluid problem, we come with the some differential equation that are highly nonlinear. And as I already told you that two types of techniques are used. One is called analytical technique and other one is called numerical techniques. अगर हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम हो, लीनियर हो, तो मोस्टली हम जो है वो एनालिटिकल टेक्निक्स यूज करते हैं. और अगर नॉन लीनियरिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाए तो फिर जो है वो एनालिटिकल सॉल्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर देन वी मूव टू न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस. एनालिटिकल सॉल्यूशंस आप ये भी कह सकते हैं कि एग्जैक्ट टाइप सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, और न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस जो हैं वो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करते हैं. और मोस्टली हम जो है वो ये न्यूमेरिकल रिजल्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिक्स का और मैटलैब. Here are some analytical techniques that are mostly used in our fluid problems.
I have mentioned some analytical techniques like perturbation method, dominant decomposition method, homotopy perturbation methods, homotopy analysis method, optimal homotopy analysis method. All these techniques are basically analytical techniques and provide us the exact solution of the problem. But when the problem is highly nonlinear, these techniques are not applicable or fail to find the solution of the problem. So we move toward the numerical solution. और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में फिर हमारे पास ये दो तरह के आप कह सकते हैं केसेस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट टाइप या के मेथड वो होते हैं जिसमें हम आपने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, और दूसरी कैटेगरी या दूसरी टाइप्स के मेथड्स जो हैं इन न्यूमेरिकल मेथड्स, उसमें हम डायरेक्टली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को बाय यूजिंग दोज बाउंड्री कंडीशंस जो है वो उन्हें सॉल्व करते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में ये कुछ वेल नोन टेक्निक्स हैं, लाइक मेथड ऑफ सुपरपोजिशन है, शूटिंग मेथड है, कलर बॉक्स मेथड्स जो हैं वो हम मोस्टली यूज करते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और अगर आप डायरेक्टली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हाइब्रिड मेटा हेरिस्टिक टेक्निक्स यूज करते हैं, एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस स्कीम है, इम्प्लिसिट फाइनाइट डिफरेंस स्कीम है। तो दीज आर द टेक्निक्स दैट सॉल्व डायरेक्टली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। मैं इसमें एक स्कीम को जो है वो फ्रॉम IVP डिस्कस करेंगे, दैट इज शूटिंग मेथड, और फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हाइब्रिड मेटा हेरिस्टिक टेक्निक जो न्यूरल नेटवर्क बेस्ड टेक्निक्स हैं, उसको जो है थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बाय यूजिंग हाइब्रिड मेटा हेरिस्टिक टेक्निक। ये शूटिंग मेथड के स्टेप्स हैं कि किस तरह से जो है वो हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं टू द फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में। So first step is guess a values of the auxiliary condition at one point of time. Solve the initial value problem by using RK method. Euler method भी first order के लिए जो है वो हम different techniques use कर सकते हैं। Euler method है, RK method है, और चूंकि unknown initial conditions जो हैं वो फिर इसमें हम guess करते हैं, और ऐसी कंडीशन guess करते हैं कि वो boundary conditions को जो है वो फिर satisfy करें। So check if the boundary conditions are satisfied, otherwise modify the guess and resolve the problem. Use interpolation in updating the guess. So अगर आपको accurate या required result नहीं मिल रहे तो हम अपने guess को जो है वो update कर सकते हैं by using interpolation. It is an iterative procedure and can be efficient in solving boundary value problem. So ये बेसिकली एक थ्रू डायग्राम जो है वो हम इसे चेक कर सकते हैं कि अगर आपका इनिशियल गैस जो है वो आपके टारगेट को अचीव नहीं कर रहा तो फिर आप इनिशियल गैस को जो है वो चेंज कर सकते हैं अनटिल जो है वो आपकी रिक्वायर्ड जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं होती। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसका जो है कि हाउ टू कन्वर्ट द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इनटू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। So first step is basically to convert the ODEs to a system of first order. If I have one second order differential equation, तो अगर हम उसे फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक सेकंड ऑर्डर जो है वो दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर थर्ड ऑर्डर है तो उससे तीन हम फर्स्ट ऑर्डर जनरेट कर लेते हैं। सो एक सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है जिसको हम आयलर मेथड या आर के मेथड से जो है वो यूज करके जो है वो फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो गैस द इनिशियल कंडीशन दैट आर नॉट अवेलेबल, चूंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए हैं तो फिर अननोन इनिशियल कंडीशन जो है वो हम गैस करते हैं। Solve the initial value problem, check if the non-boundary condition are satisfied, if needed modify the guess and resolve the problem again. So as example एक मैंने सिंपल सी जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर भी कर ली जिसकी ये जो है बाउंड्री कंडीशंस जो है ये एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है जिसकी दो बाउंड्री कंडीशंस है y0 is equal to 0 and y1 is equal to 2। तो किस तरह से हम इसे शूटिंग मेथड से जो है वो सॉल्व करते हैं और किस तरह से कन्वर्ट करते हैं टू द सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक सिस्टम जो है मैट्रिक्स फॉर्म में हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया, और इस सिस्टम को जो है वो फिर हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग आर के मेथड। चूंकि डिस्क्रिटाइज करते हैं हम अपनी न्यूमेरिकल मेथड्स जितने भी होते हैं, हम अपने डोमेन को डिस्क्रिटाइज करते हैं बाय टेकिंग सम स्टेप साइज,
and that step size is represented by h. So ये डिपेंड करता है कि आप स्टेप साइज जो है वो कितना लेते हैं, और क्योंकि एक्यूरेसी जो है वो आपके स्टेप साइज पे भी डिपेंड करती है, तो जितनी आपको एक्यूरेसी चाहिए उसके मुताबिक हम इसे मॉडिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमने एक इनिशियल गैस फर्स्ट टाइम जो है 2-3 डिफरेंट इनिशियल गैस लिए हैं। सो पहले हमने इनिशियल गैस जो लिया है वो y डैश ऑफ 0 जो है दैट इज इक्वल टू 1, और फिर जब हमने इसकी वैल्यू जो है वो चेक की तो वो हमें 0.9 समथिंग, मतलब वो जो हमारी बाउंड्री कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। फिर हमने इनिशियल गैस जो है वो चेंज किया और फिर दोबारा से जो है वो हमने उसे कैलकुलेट किया। सो ये तो 3 जो है वो डिफरेंट इनिशियल गैस हमने इसमें कंसिडर किए हैं, और जो हमारी बाउंड्री कंडीशन को फुलफिल कर रहा था, तो बाय टेकिंग दैट इनिशियल गैस जो है वो हमने फिर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमने फाइंड आउट जो है वो कर लिया। तो ये एक थर्ड गैस था जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन को जो है वो फुलफिल कर रहा था, तो उसके मुताबिक फिर हमने सॉल्यूशन जो है वो अपनी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्व कर लिया। ये समरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ शूटिंग मेथड। इसके बाद जो है वो हम डायरेक्टली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बात करते हैं कि अगर हम डायरेक्टली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं तो फिर जो है उसमें डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं जिसमें ऊपर हमने मेंशन की हैं। तो स्पेसिफिकली जो है डिस्कशन है वो हाइब्रिड मेटा ह्यूरिस्टिक टेक्निक पे है, जिसमें हम सबसे पहले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को मॉडल करते हैं और एक सोल्यूशन स्पेस जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, और उस सोल्यूशन स्पेस में से फिर बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग एनी ह्यूरिस्टिक टेक्निक। उसमें जेनेटिकल एल्गोरिथम हो सकता है, पार्टिकल स्वार्म, चूंकि लेटेस्ट अडॉप्टिव स्कीम है तो इसलिए जो है वो पहले हम जो है वो वर्क कर रहे थे उस पे, शूटिंग पे, कलर बॉक्स पे। तो नाउ डेज जो है वो पीपल वर्क्स ऑन दिस स्कीम दैट आर हाईली एक्यूरेट एंड टू सॉल्व हाईली नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स। सो ये डिफरेंशिएट हमने कर दिया इसमें न्यूरल नेटवर्क इन जनरल, बायोलॉजिकली न्यूरल नेटवर्क हम किसको कहते हैं, और इन केस ऑफ our problem artificial neural network जो है वो। So basically neural network is a system of composed of many simple processing element operating in parallel which can acquire, store or utilize exponential knowledge. Whereas artificial neural network is basically usually called neural network is a mathematical model or computational model that is inspired by a structure or functional aspect of biological neural network, which usually operate in parallel and are configured in regular architecture. ये दोनों के डायग्रामेटिकली डिफरेंस है। बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क हमारे पास इस टाइप का होता है और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो हमारे पास इसमें होता है, जिसमें हम इनपुट लेते हैं और फिर कोई एक्टिवेशन फंक्शन जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो हम यूज कर सकते हैं। और फिर जो है बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं कि व्हाट इज द इनपुट सिग्नल एंड एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो बेसिकली उन इनपुट सिग्नल को यूज करके हमें फिर एक सॉल्यूशन स्पेस की जो हम बात कर रहे थे कि हमें सॉल्यूशन स्पेस जो है प्रोवाइड करता है, और फिर हम उस सॉल्यूशन स्पेस में से अपना रिक्वायर्ड बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम और एनी अदर न्यूमेरिकल टेक्निक्स। ये बेसिकली एक डिफरेंस है कि बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में सोमा होता है और हमारे पास जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हम उसे न्यूरॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंड्राइट को हम एज ए इनपुट कंसिडर करते हैं, एक्सन को आउटपुट होता है और स्नैप्स जो है वो हमारे पास वेट्स होते हैं, और इन्हीं वेट्स को बेसिकली जो है वो फिर हम ऑप्टिमाइज करते हैं बाय यूजिंग पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन और जेनेटिकल एल्गोरिथम और अदर heuristic techniques. Here are some activation functions. 4 common choices available in literature that are mostly used. First one is called step function, sine function, sigmoid function, linear function. So we use these activation function according to our problem that will and mostly we have used log sigmoid function in our cases.
which gives the accurate or desired results. यहाँ पर ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि इन फंक्शंस की लिमिटेशंस क्या हैं और ये जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राफिकल इनकी रेंज हमारे पास जो है वो किस तरह से जो है वो मिलती है। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है किस ऑर्डर की इक्वेशन है, तो ये हमारे पास हमारा डिपेंडेंट फंक्शन हो गया। अगर सेकंड ऑर्डर है तो हमें फिर इसके विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्डर हमें इसके डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होंगे। इन जनरल अगर केथ ऑर्डर है तो आप इस फंक्शन को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू के टाइम्स, where AI's, WI's and BETA's are real valued bounded adaptive parameter, और इन्हीं पैरामीटर्स को जो है वो फिर हम ऑप्टिमाइज कर लेते हैं by using built-in technique in MATLAB that is called genetic algorithm or PSO, particle swarm optimization. ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेल नोन पेन लीव इक्वेशन है। इसका न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर जो है वो हमने ड्रा किया है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, जिसमें यही हमारे पास जो है अगर हमने लॉग सिग्माइड फंक्शन कंसीडर किया है तो उसके मुताबिक जो है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है वो हम इसने इसका बना लिया है। तो इस मॉडल से जो है वो फिर हमें एक सोल्यूशन स्पेस मिल जाती है, जो नंबर ऑफ हमारे वेट्स हैं वो हम ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, डिपेंड करते हैं आप कितने न्यूरॉन कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें फिर एक किस तरह की जो है वो सोल्यूशन स्पेस मिल जाती है। और अब इस सोल्यूशन स्पेस या सर्च स्पेस में से जो है वो हम बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है या फिजिबल सोल्यूशन जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम या अदर जो है वो हमारे पास हेरिस्टिक टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो जेनेटिक एल्गोरिथम को हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से जो है वो जेनेटिक एल्गोरिथम जो है वर्क करता है, और हम फिर बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। So genetic algorithm is a search technique used in computing to find true or approximate solution to optimization and search problem. Genetic algorithms are categorized as global search heuristic. Genetic algorithms are particular class of evaluationary algorithm that use technique inspired by evolutionary biological such as inheritance, mutation, selection, crossover, also called recombination. So ये basically steps हैं genetic algorithm के mutation, selection and crossover. How do we use GAs? Choose parameter to optimize, जो हमें neural network से parameters मिलेंगे, तो हमने choose करना है कि किन किन को जो है वो हमने optimize करना है। Determine chromosomal representation of parameters, जो parameters मिलेंगे उनकी chromosomal representation करेंगे, binary form में ये usually हम करते हैं 0-1 की form में। Generate initial population of individuals chromosome scheme, evaluate fitness of each individual to reproduce, allow selection rule and random behavior to select next population. ये इसका जो है वो फ्लो चार्ट है कि इनिशियलाइजेशन करते हैं पॉपुलेशन की, फिर इवेल्युएशन करते हैं और फिर सिलेक्शन और फिर रिकम्बिनेशन करते हैं अनटिल जो है वो हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिल जाता। ये कुछ और हमारे पास अदर मेटारिस्टिक टेक्निक हैं जिसमें पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, सिमुलेशन इन हीलिंग आ जाता है, बैट एल्गोरिथम आ जाता है, हनी बी, फायरफ्लाई। आफ्टर न्यूरल नेटवर्क मॉडलिंग इनमें से कोई सी भी टेक्निक जो है वो यूज की जाती है जो है टू फाइंड बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन द सर्च स्पेस। ये हमने अपने एक प्रॉब्लम के लिए, फ्लूइड प्रॉब्लम के लिए एक आप कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था कि बेसिकली हमारे पास जो है वो फ्लूइड प्रॉब्लम होता है, तो पहले स्टेप में हम उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क, और फिर हाइब्रिड टेक्निक यहाँ पर हमने यूज की थी। पहले जीए से जो है वो हमने उसके बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, और फिर जो बेस्ट फिटेड वेट्स थे जीए के वो हमने एज ए इनपुट दिए लोकल सर्च टेक्निक जो है आईपीए को, और इसके थ्रू जो है वो फिर हमने बेस्ट इंडिविजुअल्स ऑफ जीए आईपीए एल्गोरिथम जो है वो फाइंड आउट किए, और वहीं फिर हमारा जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। ये एक हमने फ्लूइड प्रॉब्लम पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है की थी। आयरिंग प्रॉब्लम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है ओवर अ स्ट्रेचिंग शीट,
basically two-dimensional and incompressible flow है airing oval और flow over stretching sheet. ये इसकी ज्योमेट्री है और इस फ्लो को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशन इन टू डायमेंशंस आर रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन 1, 2 and 3. Equation 1 is basically continuity equation for unsteady compressible fluid, incompressible fluid. Equation number 2 जो है ये हमारे पास x component of momentum equation है and equation 3 is represented the y component of momentum equation. After applying the boundary layer approximation, we get these are the boundary conditions of equation represented in equation 5. After applying the boundary layer approximation used in equation number 6, we have the dimensionless differential equation, which is represented by equation 7, and corresponding boundary equations are represented in 8. तो ये बेसिकली हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है और उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो हमें 3 ये बाउंड्री कंडीशंस गिवन है. चूंकि सेमी इनफाइनाइट डोमेन थी तो इनिशियल कंडीशन जो है वो 0 पे है और जो बाउंड्री कंडीशन जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी में है. तो बाय यूजिंग अबव एल्गोरिथम जो हमने इस फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब किया था, तो इसको यूज करते हुए बाय यूजिंग मैटलैब जो है वो हमने फिर ये वेलोसिटी प्रोफाइल को जो है वो ड्रा कर दिया कि वेलोसिटी जो है वो किस पैरामीटर के अगेंस्ट जो है वो इंक्रीज कर रही है या जो है वो डिक्रीज करती है. Thank you. This is the end of the presentation. Thank you, Dr. Saab. Thank you so much. Please, any question from audience? Please, any question? Dr. Jamal Nisami? प्लीज ऑडियंस कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हैं डॉक्टर इतिशाम साहब से. तो नो क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस. Thanks a lot, Dr. Itisam for delivering a very informative lecture on the subject. I would like to thank all the participants for their participations. Thanks to all Dr. Itisam Saab and other audience. Thanks to Dr. Itisam Saab. Thank you so much. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.